Hello, welcome to my channel, and this is Divine Love with NJVS. In this video, we are going to be discussing how you can quickly move into the next phase of your life, the next chapter of your life. Probably you have been wanting to have that new life, the start to the new beginning, moving into the new house, getting the new car, and changing your vibration to manifest that reality. And I can see that there has been a lot that you have been doing behind the scenes. You've been working on it, and currently the powers of the universe is suggesting that a huge transformation is has happened and a huge transformation is taking place, and you are going to be shifting to the new reality. This will be a pick a card reading, so there'll be two piles. You will choose your pile that suits you, that you are drawn to, and you will get the messages accordingly. So amongst the messages, you will figure out number one, what experiences of the past you have to let go to move on to the next new chapter. What's a usual past experience to learn from? um, what's coming to life within you, and what steps do you need to take in order to embrace the new journey, the new beginning. Also, what will this new chapter bring for you? So in totality, there are going to be 5 things I'm going to tell you, 5 different sections to it. First, what you have to let go. What are the past experiences that you should let go? Then, what past experiences say what you have to learn? And then, what's coming to life within you? What steps do you need to take in order to get in there? And what will be the new chapter bringing for you? So, for choosing, I will show you two piles. I'll show you two things, two products, and you can choose one. Okay. So, one is a headphone, and the other one is a perfume. So, you choose between a headphone and a perfume. So, pile number one. The first message that I am drawing for you: for what past experiences do you need to release? Pile number one, what past experiences you need to release? This is the first card for you, the Four of Pentacles. Okay, so past may I can see that in the past you have been holding on to a lot of worries related to finances, and how you have been growing your finances is in your mind you were thinking about money, making money, and your stability. In your heart you used to wonder like how much money you have, and suppose you have to travel somewhere, then how you're going to be traveling to those places, how can you get some money to travel probably to new places. And there has been also your foot, and on your foot also you've been very, basically you felt little stuck as well because of finances. So due to financial situation in your life, you were not able to actually expand as much as you wanted to expand and move as much as you wanted to move. There was something in the energetic realm that was kind of like stopping you and kind of keeping you at one place, because maybe it was your job that you were doing in which you had to go every day, and that demanded a lot of your time and you could not travel much. Maybe it was your studying or something that was purely more towards your stability. That's why you were in a stable phase, you were quite stable, but you wanted to travel and explore more, and that exponential growth was not there. There was this stability, but kind of like yeah, you were grounded, the money was there, but it was not allowing you for a lot of movement, for a lot of travel. Okay, so you have to let go of those belief systems by using simple affirmations that I am worthy of all good things, and I have come to earth to experience new places, to experience new food, new travel experiences. I'm open to travel. I'm willing to experience new things. You have to be in that open space to accept places to travel. There are a lot of places in the world which is so beautiful, and I'm definitely going to be reaching those places, and I'm in love with my life and how everything works out for me. Money works very well for me. I'm a money magnet, you know.
and even when I'm sleeping, I'm making money. Money comes to me very easily. Money is never a problem for me. My relationship with money is very good, and universe is always working in my favor. It's conspiring in my favor. So these are some affirmations that you can try, and you can also seek on Google and some search it out, some nice affirmations. Also, you can get some really nice affirmations on loveandjoymanifest.com, wherein you can buy affirmation cards, and you can use these cards on a daily basis, like in the morning and at night. Now I'm going to tell you what's the usual past experience that you have to learn from. Your usual past experience, from where you need to learn something that has happened in the past, जिससे कि आपको कुछ सीखना चाहिए, or that will help you to move ahead in your life. So what is the past experience that universe wants you to learn in order to make you level up and move into the next phase of your life? Right, it is a judgment card. In the past, you have I see you have signed some contracts, or you have had situations where you signed something, and universe की side से आपको judgment मिला है. So basically, what you absolutely were very stressed about, you managed to get decisions in your favor. Also, I see in the past you have signed important contracts, and that was something like a manifestation, something that you wanted to manifest and you did manifest. So universe wants you to have you know complete faith in it, because it has already shown you, universe has already shown you that how powerful universe is, and how you have actually manifested, because your wishes are not ignored, they are heard and they are granted. So focus on making the wish, and things are going to come towards you. So you are asked to celebrate those victories, take time for the celebration, and you are asked to make sure that the right kind of um, mindset you have, because in the future you will also be signing a lot of contracts. So maybe you need to learn more about the law and order of things related to finances. Maybe you need to learn more about financial services, taxes, and personal growth, personal finance, because okay, now let's see what's coming to life within you. Okay, what is coming to life within you? What's coming to life within for my first buyer? What's coming to life within you? What is coming to life within you? What's coming to life within you? Let's take one card. Justice. Wow. So you should be very clear about what you think, because your mind is becoming a very potent space, very fast manifester, very fertile ground. Whatever you are asking for is having the power to manifest very fast. So it's very important that the kind of input you put in, you get the output accordingly. So the kind of input you put in should be very well thought of, because your mind is actually very powerful right now. So if you start thinking and dwelling on negative past experiences or negative self beliefs, so then that is the kind of thing that you will attract for yourself. So you asked to please फोकस कीजिए उन चीज़ों पे जो आपके हित में हो, जो आप चाहते हो, और उन पे फोकस करने से आपको वही चीज़ें मिलेंगी. तो आप काइंडली फोकस करें ऑन व्हाट यू वांट, क्योंकि आप जो भी चाहोगे आपको वो मिलेगा. एंड आई सी 11 ऑन स्क्रीन, दैट्स अ कॉन्फर्मेशन. नाउ व्हाट स्टेप्स डू यू नीड टू टेक इन ऑर्डर टू एम्ब्रेस दिस न्यू बिगिनिंग? ऐसे कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए इन न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट करने के लिए? व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू शुड टेक? For pile number 1, the people who've chosen pile number 1, what are the kind of steps they should be taking? This is a timeless reading, so whenever you find this reading, it's going to be applicable for you. Okay, so I'm getting 2 cards. What steps? So there are 2 steps. Firstly, ये नए बिगनिंग के लिए आपको दिया जा रहा है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून कार्ड. ओके, सो यू हैव बीन आस्क्ड दैट यू हैव टू कनेक्ट विद योर इंट्यूशन वेरी वेल, और आपको अपने अंदर का जो फायर एंड वाटर का जो बैलेंस है उस पर आपको काम करना चाहिए. यू नीड टू बी इन बैलेंस बिटवीन योर
your emotions and your actions. You have to draw the balance between what you're thinking and what you're feeling and the kind of actions that you're taking. And when you're taking those actions, you should be very expressive. um, you have to become very expressive, you have to become very quick, very fast in taking actions. A lot of travel, a lot of movement. You are asked to move, you're asked to explore, you're asked to express, you're asked to accept your creativity within. You are asked to you know experience that life has in hold for you. And also, please make sure that you are connected with the moon cycles. The new moon and the full moon are very magical times when in this time you can manifest a lot of things in your life very powerfully. So you are asked to experience this. कैसे कर सकते हैं न्यू मून के टाइम में? फोकस ऑन ग्रोथ, फोकस ऑन न्यू आइडियाज, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू ब्रिंग टू लाइफ. लाइक वो कौन सी बीज है जो आपको बोना है, लाइक व्हाट यू वांट टू सो that will reap in the future. New moon is the time when you are supposed to be connecting with your intuition, connecting with yourself, and come up with those new ideas which you want to give light to without any hesitation, and then take action. If it requires you to go to places, then move. If it requires you to go to a different country, then go. Don't stop yourself. So that is something that you will be doing. These are things that you will be doing, and these are the steps that is required for the new beginning. If you have to go somewhere, go there. Don't stop, and that's a confirmation. There's a lot of fast traveling between states, traveling between timelines, traveling between different countries, and yeah, maybe you might have to go to different continents for your work, expanding your businesses to places if you're starting a business, or if you're looking for educational opportunity, then it might take you to a different land, and you should be willing to accept those movements. And you are also going to be in a lot of power to uh, speak up and say what matters to you, and do not hold yourself back. There is no stuck energy where you are stopping yourself. Moreover, you are in a lot of power and having a lot of grace while you're moving, right, and doing things. Now I'm taking the last message for this file, and it is, what will this new chapter bring? Okay, what will this new chapter bring? ये जो नया चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है, फर्स्ट थिंग, आपने जो इतना टाइम से परसीव करा है, परसिवरेंस जो आपने दिखाया है, आपको उस चीज़ का आंसर मिल रहा है. यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दैट stuck energy. You're going to get out of this energy of not having enough, fighting it out, trying very hard, wanting things to work out in your favor, and finally you will be able to take the um, breath of peace. Again, your confirmation. You will be partying, you will be celebrating, and you will be out of that cage. You're not going to be experiencing that stuck energy anymore. और वो जो आपको इतना यूनिवर्स ने स्ट्रॉन्ग बनाया है इस फेज में, वो आपको फ्यूचर में बहुत काम दिलाएगा, क्योंकि आपने भगवान पे, यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे विश्वास नहीं छोड़ा. आप एंड में भी कितना भी चीज़ें आपके फेवर में ना हुआ हो, आपने उसको एक्सेप्ट करा और आपने यूनिवर्स को ग्रेटफुली थैंक यू किया. आपने शुक्राना दिया, एंड यू आर विलिंग टू ग्रो अप एंड लेवल अप फ्रॉम देयर, एंड यू हैव नेवर लॉस्ट योर फेथ. तो आपका जो ये विश्वास है यूनिवर्स पे, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू टेक यू टू दिस न्यू चैप्टर, एंड इट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ spiritual power, lot of resilience that you will have. आपको हील करने के लिए मौका मिलेगा इस न्यू चैप्टर में. इन दिस न्यू चैप्टर you will get a lot of time to focus on yourself. You will be able to focus on the things that had affected you and in the past, so you'll be able to focus on things that you love, right? You won't focus on the things that did not work out. आपके लाइफ में इतना टाइम एंड स्पेस और एनर्जी रहेगा, एंड इतना अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी कि आप जो फ्लो ऑफ रिवर है उस पर फोकस करेंगे, जो फ्लो ऑफ नेचर है, जो अबंडेंस ऑफ नेचर है, उस पर फोकस करेंगे. आपके पास टाइम होगा सोचने के बारे में कि आप कितने दूर आए हो, हाउ फार यू कम, हाउ मच यू हैव बीन एबल टू बैटल इट आउट, how much of strength you have inside of you, what a warrior spirit you are. So those things you will have the time to acknowledge that, and give yourself the credit for being able to come so far.
and also be able to heal yourself, right? And one more message, what will be bringing in this new chapter? Lot of healing. What else will be coming in this new chapter? Yes, you will be able to, you've learned so much in till now. So in this new chapter, you will know how to deal with the people who manipulate. You will know how to deal with liars, with cheats, with manipulators, and you will be very gracefully be able to deal with all of that, right? आप उन लोगों से दूर चले जाएंगे जिन लोगों से आप जिन्होंने आपसे जिन्होंने आपको चीट करा, जिन्होंने आपसे लाइज बोला, चीट करा, आपके लिए आपके हित में नहीं सोचा, आपके अगेंस्ट काम करना चाहते थे, आपको रोकना चाहते थे, आपकी आवाज़ रोकना चाहते थे, आपको ब्लॉक करना चाहते थे, उन सारे लोगों से आप ऑलरेडी दूर हो चुके हैं, हो सकता है राइट नाउ, और आप फ्यूचर में भी दूर होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें आप उनके साथ नहीं होने वाले हो। जिन लोगों ने जो आपके हेटर्स है या आपसे लोग जो जेलस है या जो आपसे मैनिपुलेट करते हैं, आप उन सब लोगों से दूर चले जाएंगे और आप एक हैप्पी स्पेस में जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहा है। सी, you're going to be traveling, you're going to move out of all of these places, all of these negativity, of the pain, of this hurt, of the cheating, इन सब चीज़ों से दूर होके ये जो स्टक एनर्जी में आप थे, इस सिचुएशन से आप बाहर जा रहे हो और आप एक नई रियलिटी के टूवर्ड्स जा रहे हो। एंड ये रियलिटी आपके लिए कैसा रहेगा, ये जो नया रियलिटी होगा जिसमें आप मूव करके जाएंगे, ये कैसा रहेगा? हाँ, इसमें बहुत सारा ग्रोथ है, लॉट ऑफ मनी, जिसके साथ आप इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। यू आर गोइंग टू हैव सो मच अबंडेंस दैट यू विल नॉट फील स्टक। देखिए, बहुत बड़ा एनर्जी का शिफ्ट है, बहुत सारा ग्रोथ है। पहले इस एनर्जी में थे जहाँ पे अ पर्सन इज स्टक एंड बिकॉज यू नो ही इज having limited resources, so basically he's just making the money and just holding it, because when you have little then you don't want to move much, because otherwise you will get into a lot of debt traps and all, right? But in this situation you have so much that you can invest and you can travel and you can go to far off lands without limits and very fast. So there are fast mode of traveling that's coming up for you. So this is what I have for pile number 1 who had chosen this headphone. And probably while you're traveling you'll be listening to good music and you'll have a lot of happy mind. देखिए, आपके लिए एम्प्रेस कार्ड भी आ रहा है, तो हो सकता है आपको इन्हें आप बिजनेस वेंचर स्टार्ट करें जिसमें आपको बहुत सारा ग्रोथ मिले, और इस वजह से आपने जो पास में जो हर्ट एक्सपीरियंस किया था उससे आप बाहर निकलेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह भी मिलेगा और लोगों से बहुत सारा सपोर्ट भी मिलेगा। आपके अंदर का जो बचपन था, जो जो आपने बचपन से चाहा है, द यंग पर्सन इन यू, जो आपका एनर्जी था 25 साल की उम्र में, आप उसको अच्छे से लिव कर पाएंगे एंड यू विल बी वेरी यंग and you will fill your life with a lot of love, and the lovers card signifies that you will be with your divine partner, so there's going to be a divine union too for you, and that is going to be on point. I think this reading is amazing and I'm so happy for you guys. And if you like the message, do subscribe to my channel, and this is a new channel that I have, so it is, your subscription means a lot to me. And if you want to book a personal reading, then I will share the link down below from www.loveandjoymanifest.com. You can also book a personal reading. This is a general reading, so take it as it may resonate. It might resonate with some people and it might not resonate with some. So if it resonates with you, it's your reading. Force करके reading में कुछ लेना नहीं चाहिए। जो आपके लिए resonate करता है वही आपके लिए है, और जो resonate नहीं करता उस मैसेज को किसी और के लिए छोड़ दे। और तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको यूनिवर्स फाइनली जस्टिस सर्व कर रहा है, और आप जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे उसका फल आ रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आई जेन्युइनली विश यू ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, एंड press that bell button so that next video that I upload you get to know. Bye. Hi guys, those who have chosen the perfume bottle, this reading is for you. तो अभी आपको पता चलेगा कि आपको वो कौन सी चीज़ें रिलीज़ करनी चाहिए अपनी लाइफ से अपने न्यू चैप्टर में मूव करने के लिए, जो नया फेज़ यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है। एवरीथिंग विल बी वेरी न्यू इन दिस न्यू चैप्टर। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फर्स्टली आई विल डिस्कस दैट यू हैव टू रिलीज, राइट? Firstly, for pile 2 who have chosen this perfume bottle, what is
the experience that they have to release? What kind of past experiences they should release to start a new chapter? Angels, please give me your guidance. What is the kind of past experiences they have to release to start the new chapter? Angel, kindly give me your guidance. What kind of experience they should release? Oh my god. The Sun card. So पास्ट में आपने बहुत बार अपने इनर चाइल्ड को हो सकता है नर्चर नहीं करा होगा. बहुत टाइम आपने अंदर से आपका इनर चाइल्ड जो चीज़ करना चाहता था आपने उसको रोका, वो करने नहीं दिया. ये इस चीज़ को आपको अपने न्यू चैप्टर में रिलीज़ करना चाहिए. जो भी आपको खुश करता है, अगर आपने पास्ट में खुद को वो उन सारी चीज़ों को बहुत टाइम नहीं किया हो, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया हो, तो वो आपको बोला जा रहा है कि ये आपको करना होगा. आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में जब जब आपने अपने इनर चाइल्ड को नेग्लेक्ट किया, तो दैट यू हैव टू रिलीज. यू शुड नॉट नेग्लेक्ट योर इनर चाइल्ड एंड यू शुड नॉट नेग्लेक्ट और खुद को जिन चीज़ों से खुशियाँ मिलती है उन चीज़ों को, इफ़ यू हैव not done it, for example you like to dance, let me give you an example, like suppose you want to dance and that makes your inner child feel very happy, और वो आपने किया नहीं क्योंकि आपको सपोज से पढ़ना था या जॉब करना था या कुछ ऐसे काम थे जिसकी वजह से आपने वो चीज़ लेट गो किया, आपने नहीं किया. तो यू आर आस्क्ड कि ये सारी चीज़ें आपको अपने नई चैप्टर में नहीं करना है. जिन जिन चीज़ों से आपको खुशियाँ मिलती है, आपका इनर चाइल्ड हैप्पी होता है, उन चीज़ों को सैबोटाज नहीं करना है. जो चीज़ करके आपको हैप्पीनेस मिलती है, डू नॉट सैबोटाज दैट. स्मॉल एक्सपीरियंसेस लाइक डांसिंग, पेंटिंग, मे बी you like to go to the park, bask in nature, maybe you like to get flowers for yourself, make your room look very pretty or your house look very nice. So whatever things that you like to do and you have not done and sabotage yourself in the past, don't do those things. Secondly, what's your usual past experience that you have to learn from? What is the past experience that you should be learning from? What past experience that you should be learning from? Yeah, your cards. This pile is very special. This is a very special pile because there's a lot of blessings from universe, and you're a very chosen ones. Maybe these are the chosen ones: healers, tarot card readers, Reiki practitioners. Very spiritual group, and you have been always taken care of by the universe. So you've been asked that learn this thing, that whenever you have prayed to God, God has always listened to you, God has always responded to you, God is always protecting you, He's always there with you. And connect with the energy of Kali Ma, connect with the energy of Shivji, Sai Baba, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, हम उन सारे गॉड्स के साथ कनेक्ट करें जो आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, गणेश जी. एंड just pray because your prayers are always heard. You're always blessed. You're very protected and very blessed. तो जहाँ पे हेरोफेंट आ गया, सन कार्ड आया है, तो obviously this pile is very very blessed. What's coming to you life within you? What is coming to life within you? What's coming to life within you? So this is a timeless reading and it's a general reading, so it might resonate with some of you and it might not resonate with some of you. Please don't force any message on you. And I might not sugarcoat everything. I don't like to sugarcoat things, so I will just tell you as it is. Please. Okay, so what's coming to life within you is, I can see you'll be able to stand up for yourself. अगर आप एक बहुत sweet person हो, I was saying some things like sweet and all, right? If you're a very sweet person and there have been some people who have आपका sweetness का फ़ायदा उठाया हो या आपके niceness, kindness का फ़ायदा उठाया हो, in this part of your life, you will not let them do that. You will become very see, you will have the balance of the kindness, sweetness and being able to stand up for yourself. So you will be always standing up for yourself wherever there are situations which calls for conflicts. You will not have people pleasing behaviors. You will not display those behaviors and आपको जो मतलब ठीक लगता है आप बोलेंगे, आपका अपने हक के लिए आप खड़े होंगे and you will not let anybody mistreat you or treat you like a doormat. आप बहुत खुद का वैल्यू अच्छे से समझ रहे हो
और आप समझ चुके हो, तो ये आपके लिए रहेगा. बाकी मैं देखती हूँ अभी कि व्हाट स्टेप्स डू यू नीड टू टेक इन ऑर्डर टू एम्ब्रेस दिस न्यू बिगिनिंग. कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए नया बिगिनिंग को एम्ब्रेस करने के लिए. व्हाट स्टेप्स शुड द पाइल टू टेक टू एम्ब्रेस दिस न्यू बिगिनिंग. कैसे स्टेप्स लेने चाहिए. हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स है, बट आई विल टेक ओनली वन, सो आई हैव टू डू इट अगेन. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको फोकस करना चाहिए. आई विल एक्चुअली गिव यू 3 to 4 steps. What steps do you need to take in order to embrace this new beginning? कौन से steps लेने चाहिए. Wanted to be accurate. What steps should they take to embrace this new beginning? What steps? Can you please give me the guidance? What steps should they take? Yeah, the steps that you have to take is, first of all, you will be moving out. You should be willing to move out, change of location, go away from things, places, situations that is not serving you, that is causing conflicts, internal conflicts or external conflicts, that is not making you happy. So that is the first step, that go away from those places, travel, move out, location change, basically. You'll be moving out of that. Wherever you are feeling stuck, you are going to be like moving out of that. This is a step. Be willing to move. Be willing to take the steps to get out of that situation and don't feel stuck there. Avoid conflicts, basically. Whenever you feel like there is a conflict situation, just move out of that situation. Okay. What other steps needs to take to embrace this new beginning? One more step, please, to come out of this, get into this new beginning. Another step, please. You have to give birth. A new energy will be coming out. Yeah. Coming in a flow. One more step, please. इंट्यूशन का कार्ड बार बार आ रहा है. वन मोर स्टेप प्लीज. Yeah. I see that the steps that you have to take in order to embrace this new beginning is, firstly, move out of the situations that is not fulfilling you and that is creating conflicts. Secondly, connect with your intuition. You know what is right for you. Do not overlook them. Thirdly, I see you need to be focusing more on your career, and the more you are focusing on building your career, आपका लव लाइफ एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू. इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, बट focus on your intuition and move towards creating a life of abundance. What is giving you much of fulfillment, उन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करना बेटर रहेगा, जिस चीज़ से आपको यूनिवर्स जो देना चाहता है आप उसको रिसीव कर पाए. अगर कोई सराउंडिंग है और उस सराउंडिंग में यू नॉट फीलिंग योर बेस्ट, देन इट्स बेटर दैट यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, फिगर आउट जिन चीज़ों को करके आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपको गोल्डन फील कराता है, उस एनर्जी में पहले आप इंटरनली आए. इंटरनली क्रिएट एन एटमोसफेयर वेर इन यूर फीलिंग वेल्दी, वेर यूर फीलिंग रिच, वेर यूर फीलिंग abundant. Paying gratitude can be extremely crucial in this point of time. Being very grateful for all the things that you have, because when you are moving to a new reality, so you want to take that energy of positive energy with you, right? You don't want to go with the negative energy. So it's asked that you connect with the deeper aspect of yours that is that knows how to balance things, that knows how to make an abundant life. And you should be able right now to journal things that you want to bring in reality and what you want to create. So your idea, the steps that you should be taking here right now is, you should be focusing on where you want to go. Yeah, where you want to go and what you want to be doing. So in your dream life,
वो कौन से वो क्या काम कर रहे हैं आप, उसमें आप कैसे दिखते हैं, आप क्या पहनते हो, क्या काम करते हो, कौन से काम से आपके पास पैसे आते हैं, आपका स्टेबिलिटी जो है वो कैसे बिल्ड हो रही है, आप कहाँ मूव करके जा रहे हो, आपका डेली लाइफस्टाइल कैसा है, आप कहाँ जाना चाहते हो, उस पे फोकस करने से आपका इंट्यूटिवली आप गाइडेड होंगे और आप अपना न्यू बिगनिंग में ये सब चीज़ों को इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। बट उसके लिए आपको अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना होगा और ऑन अ रेगुलर बेसिस जर्नलिंग करना होगा और यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करना होगा, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कम्युनिकेट करना होगा, अपने एंसेस्टर्स के साथ कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि आई कैन सी यू आर अ हाई प्रिस्टेस। तो आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, एंजल्स के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट कर पाए। पर वो लोग, और उनके साथ कनेक्ट करने से आपको बहुत सारा सक्सेस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल अबंडेंस भी मिलेगा। और आपको मतलब बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहे, अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहें। आप जितना अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपको गाइडेंस मिलता रहेगा एज यू आर अ इंट्यूटिव सोल एंड यू आर अ वेरी व्हाट यू कॉल हाई प्रिस्टेस सोल। तो आपके पास बहुत सारे एबिलिटीज़ है, पावर्स है, जो हो सकता है आपको खुद ही अभी पता नहीं है। तो आपको उनको अनकवर करने की बहुत ज़रूरत है और आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करें। नाउ व्हाट विल दिस न्यू चैप्टर ब्रिंग फॉर यू? व्हाट विल दिस न्यू चैप्टर ब्रिंग फॉर यू? This new chapter will bring Ace of Swords, um, very powerful thought process, clear thinking. You will be able to, if you have a business, then you will be able to build it to an empire. If you have a job, then you will be able to level up to the next level. Basically, you will be able to, if you're a woman, then you will be able to reach the queen status, being the best in the field. And if you're a man, then with your own hard work, basically your own clear thinking and intelligent thinking, you will be able to reach the space like of a king, as in like the best in the field, the topmost hierarchy. And that too with very fast, intelligent, intellectual, clear thinking. It's from your mind space. You'll be very intelligently doing it because your mind is very sharp, like the sword, you can see. So this is what you're going to have in the new chapter, that the top of the field, you'll be on the top and you'll have very clear, very fast thinking, cutting edge technology when it comes to your brain. So you have a lot of inner power, inner wisdom that will come in play and bring you on the top. And what else will it bring in your love life? What will this new chapter bring in your love life? In your love life, I see you will feel very relaxed. The tension and the stress, that sleepless nights that you are having, that will not be there, because you will take adequate rest and you will feel very calm. That स्ट्रेस वाला जो थॉट प्रोसेस था, आप उससे बाहर आ जाएंगे। आपका क्लियर थिंकिंग उस पर आपको हेल्प करेगा। क्लाउडेड थॉट प्रोसेस नहीं रहेगा, रात को आपको इतना चिंता नहीं रहेगा लाइक व्हाट टू डू। उसके लिए आपको बोला जा रहा है आपके इंट्यूशन के साथ आप कनेक्टेड रहे। रात को आप स्लीपलेस नाइट्स से नहीं गुजरोगे, लाइक यू विल नो एग्जैक्टली वेर यू गोइंग, राइट? सो योर लव लाइफ विल बी moving towards a positive space wherein you are going to experience and have new experiences. अगर किसी ने आपको पहले मैनिपुलेट करा है या लाइज था, ये सब था, आपको पहले स्ट्रेसफुल नाइट्स दिया है, रेड फ्लैग्स दिखाया है, तो आप उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे उन साइंस को। यू विल वॉक अवे फ्रॉम सच थिंग्स एंड यू विल वॉक टूवर्ड्स अ मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप, जो आपको हैप्पीनेस एंड एक पीसफुल स्पेस प्रोवाइड करने वाला है। तो आपका लाइफ जो है उसमें आपने पास में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, बट यू हैव वॉकड आउट ऑफ ऑल ऑफ दो सिचुएशंस। यू हैव मे बी फेल्ट द डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड यू बी बेसिकली ट्रैवलिंग बेफिक्र होके। इतना हैवी एनर्जी में आप जाओगे नहीं, लेकिन आप इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। आपके जो घर का स्पेस होगा, इन दैट होम स्पेस, you will be able to sit quietly and relax and think over things
and self introspect and create. And that's the magician card. So you'll be able to create the reality with lot of clear thinking and मतलब किसी का भी छल कपट आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा. तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास स्पेस नहीं होगा, क्योंकि आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं और आप समझते हैं कि कौन जो कितना झूठ बोलता है और क्या करता है. तो आप उन सब चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो लेसन्स सिखा दिया होगा बाय व्हेन यू आर मूविंग इनटू दिस न्यू चैप्टर. और ये आपके लिए हैप्पी कार्ड. This is your stable home space wherein you are celebrating. You see these two people celebrating, so Four of Wands. You will be celebrating and you will be very happy, but you will have a very good balance between um, between understanding that what is loneliness and what is solitude. So you will not go into the cycle of negative thinking. There's a difference between stressful thinking, feeling anxious, and a thought process wherein you are contemplating and you are understanding and you're growing. So that's what your sharp thinking will do. Your sharp thinking will be making you intelligent enough to not overthink, not stress, not feel anxious, but very clearly understand that okay, हेटर्स का जो भी इच्छा रहा है पास में वो उनको नहीं मिलेगा. मतलब आपके लिए जिन लोगों ने सोचा कि आपको वो सब चीज़ें ना मिले जिसकी आप हकदार हो, वो सब चीज़ें आपको यूनिवर्स दे देगी. तो आपको मतलब किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं होगा. आपने बहुत फाइट करा है, बहुत एक अपने पोजीशन को होल्ड करने के लिए. तो ये ओवरऑल स्पेस में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है. आपको बोलना चाह रहा है कि आप अपने अंदर का जो क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, उसके साथ कनेक्टेड रहे और उसके साथ कनेक्टेड रह के आप क्रिएट करें द लाइफ. इसमें मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस वगैरह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. एंड आपके लिए जो चीज़ें ऑलरेडी गॉड ने प्लान करके रखा है वो आपसे कोई छीन तो नहीं सकता है. तो चिंता का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें. But yeah, being in a grateful state is very important. Also, aligning all the energies towards what you want to create is much better than going into a space where you are wondering. But I see like this is going to be a very positive phase in your life. But not unlike pile number 1. In pile number 2, there is a lot of clarity when it comes to anybody who wants to क्रिएट स्ट्रेस एंड मैनिपुलेट. तो दैट मैनिपुलेशन एनर्जी से आप बच के रहेंगे. ये आपका जो नया फेज है उसमें, चाहे वो कोई भी हो. लॉट ऑफ पीपल हु आर समटाइम्स वेरी क्लोज टू अस ऑल्सो समटाइम्स डू दैट, राइट? बट यू विल बी प्रोटेक्टेड. अब मैं 2 एंजल मैसेजेस भी दे देती हूँ. एक मैसेज पैल नंबर 1 के लिए, एंजल मैसेज फॉर पैल नंबर 1. पाइल नंबर 1 को बोला जा रहा है कि प्लीज स्टे कनेक्टेड विद योर प्योर सेल्फ. जो आपका प्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करें. यू आर वेरी रेयर एंड यू आर वेरी प्योर. सो जस्ट बी द वे यू आर एंड कनेक्ट विद योर इनर प्योरिटी. एंड डेली प्रेयर्स हैव अ लॉट ऑफ पावर. सो कनेक्ट विद द लॉर्ड. whatever belief system you believe in, whichever God you believe in, God really loves a pure soul. So the more pure you are, you're always taken care of by God and you're always protected. And for pile number 2, another message that I will draw for pile number 2 is, pile number 2 को बोला जा रहा है कि या please focus on pleasure. You can see the card. Take joy. As I said that this new chapter in your life demands you to be connected with your happy self and things that make you happy and make you feel fulfilled. So do those things, and even the small things in life on a daily level, if whatever you're doing, do it with a lot of love and feel a lot of happiness for it, because you have to forgive yourself and forgive others around you, and make sure that you feel pleasure on your daily life. Okay, so if you like my video, please subscribe to my channel, and I will upload another video tomorrow. So I hope you stay blessed and always stay happy. Love and light. And this is
you can get manifestation products from loveandjoymanifest.com, where you will get crystal bracelets and crystals for healing and also for manifesting your dream life. Also, a lot of curated journals that will help you create your dream life. It has prompts and everything that you need to राइट. तो वो सारी चीज़ें मतलब जो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है आपके इनर पीस को स्टेबल इनर पीस को लाने के लिए, तो वो सब आपको वहाँ मिलेगा. टैरो रीडिंग भी आप बुक कर सकते हो मेरे साथ. कैंडल्स मेडिटेशन के लिए अलग अलग फ्लेवर्स के सेंटेड कैंडल्स बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे वहाँ पे. एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स जो क्लैरिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, गुड लक के लिए, रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स के लिए, वो सब बहुत सारा चार्ज प्रोडक्ट्स आपको वहाँ मिलेगा. आप वहाँ से अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए ले सकते हैं. और साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करें. तो पर्सनल रीडिंग जो होता है वो मोर फोकस टुवर्ड्स द अदर पर्सन रहता है. एंड ओके, सो सी यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. बाय.